With that, we come to the next module, which is on the judgments, which will be focusing on the procedures in that matter, and that's why I did not explain the procedures in the previous module. So, judgment number one is, तो पहली judgment है शेरू वर्सेस एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. इस केस में क्या देखा गया था कि एक आदमी बहुत टाइम से जेल के अंदर था, बाहर नहीं आ पा रहा था. The time to file a charge sheet had expired, but let's be honest, the time to file a charge sheet expires in each and every FIR everywhere until unless it's a very high profile matter. What did the court say? The court said that pendency of the matter is not really a ground for granting bail in the first place. मतलब अगर आपका केस बहुत टाइम से चल रहा है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, is not a ground for bail, as simple as that. So which is contrary to the findings of the Supreme Court in the case of Thana Singh versus Central Bureau of Narcotics, in which case एक बंदा 12 साल से जेल के अंदर था, उसके केस में कुछ हो नहीं रहा था, चार्जशीट भी आगे नहीं बढ़ रही थी, देयर वाजंट एनी एविडेंस बीइंग कंडक्टेड एंड सिंपली द ट्रायल हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. द कोर्ट टुक दैट व्यू दैट इसको इतना टाइम हो गया है, ये बाहर भी नहीं आ पाया है, ये क्या कहते हैं ट्रायल भी प्रोसीड नहीं कर रहा है. द कोर्ट एंडेड अप सेइंग दैट लेट्स गिव हिम बेल बिकॉज अब पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा है. एंड द कोर्ट इन फैक्ट मेड अ लॉट ऑफ रिमार्क्स एंड मेड अ लॉट ऑफ recommendations as to what needs to be done, such as simple as how a forensic analysis of the samples that is seized at the time of an NDPS FIR is supposed to take place, to more number of people just being there in the narcotic circuit across various institutions and organizations in India, and how to deal with the pendency of cases on the front of judges, where they said that adjournment ऐसे नहीं देनी है in an NDPS case going on, and in fact on the lawyers it placed a burden that अब आप adjournment नहीं मांग पाओगे, especially in a case जहाँ पे आपने date अपने हिसाब से खुद ली है कोर्ट से. adjournment मांग ही नहीं सकते हो irrespective of whatever the ground is. Although trickling it down to the district court practice in NDPS cases, it still doesn't see the light of the day, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे cases में बहुत सारी adjournments on a daily basis होती हैं. And in fact delaying trial is actually one of a very common tactic used by criminal lawyers to ensure कि उनका client जेल के अंदर नहीं जा रहा है. And in fact अगर आपका client 60-70 साल से ज़्यादा है तो your legal strategy is of the case कि आप इसको 10 से 12 साल के लिए अगर डिले कर दोगे तो the accused will die before the judgment sees the light of the day by the honorable court. Which brings us to our second judgment. So with Gurdarshan Pal Singh and others versus the state of Punjab, we come to the concept of conscious possession and well the other possession. Conscious possession is कि जब आपको पता होता है कि आपके पास क्या है, and accordingly you have the requisite permission, or you are just being conscious about the fact that you don't get caught etc. Let's say आपके घर पे अगर पाया गया है, आपके रूम के अंदर पाया गया है, आपके बैग से रिकवरी हुई है, और समथिंग जिसका आप ऑर्डिनरली ध्यान रखोगे, आपकी गाड़ी में आया गया है. इन दिस केस एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, उसके अंदर ड्रग्स थे. जब वो पकड़ा गया, इट वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल एंड द गाय एंडेड अप कमिंग बिफोर द कोर्ट. ट्रायल कोर्ट ने तो सजा दे दी कि इसके पास ड्रग्स मिले हैं एंड अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जानी चाहिए. सो द हाई कोर्ट of Punjab and Haryana, which is at Chandigarh, held in this case that अगर कोई आदमी ड्राइवर है किसी केमिस्ट का एंड ऑर्डिनरी कोर्स में उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्या लाइसेंस होना चाहिए while carrying from place A to place B, well it's not his job, right? क्योंकि at the end of the day the possession is of the chemist जिसको drugs actually procure करने हैं और दूसरी जगह बेचने हैं. And accordingly the charges against the driver of the vehicle were nullified by the High Court. This brings us to another very important judgment about conscious possession in the case of Madan Lal versus the state of Himachal Pradesh, passed by the Supreme Court of India. In this case again there were multiple accused people, गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने claim करा उनको पता नहीं था कि यहाँ पे drugs हैं, and they tried to basically adopt a defense strategy यहाँ पे एक बंदे के ऊपर ही उन्होंने scapegoating शुरू करी है and they thought that they'll get away with it. But in the factual conspectus of the entire case, it was established that these people were aware कि गाड़ी में drugs थे. Merely on the allegation by the defense that हमें तो पता ही नहीं था, it doesn't work, and whether the possession is conscious or not is to be culled out from the factual conspectus, the context कि बंदे कहाँ पे मिले थे, कैसे गए थे, and could they have been aware कि गाड़ी में drugs हैं. And after that, once that is established, there is very little room for the defense to
come out, at least in the principle of conscious possession, and accordingly the Supreme Court refused that, sorry, we won't interfere with the conviction. Now, what is very particular about this judgment is that there is a principle in law which says that you are innocent until proven guilty, which, as I explained before, is very much the flip in the cases of NDPS, where you are guilty until proven innocent, because it shifts the burden of proof on the accused rather than the prosecution. तो जो आपका पूरा legal principle है of reasonable doubt in a criminal case actually falls flat in the cases of NDPS, and it says that there should be a reasonable defense. That reasonable defense in practice boils down to something called there's a reasonable chance that the crime was committed in the first place. And the Supreme Court held this very clearly, that once you say that you are or you were not in conscious possession of a contraband or a drug that was seized by any officer, the burden to prove कि आपको नहीं पता था कि वो वहाँ पे है is on you, and it's not on the prosecution to make a story and you puncture holes there, but rather you are the one who's going to come up with a story and they are going to puncture holes in it, and that's how the legal minutiae in this case is followed. So now conscious possession, unconscious possession is basically something जो आपके ऊपर पाया गया है. जो कैसे पता चलता है? एक सर्च से. Search in simple terms under the NDPS means कि आपकी गाड़ी को देख लिया, आपकी जेब चेक कर ली, आपका बैग देख लिया, आपके घर के अंदर आ गए, and therefore now as per the rules of NDPS it is very clear that any search or any statement that you're supposed to make is supposed to be in front of a magistrate or a gazetted officer. However, in this peculiar case of Kaleem Tumba versus State of Maharashtra, the very minute principle, which is again enunciated in the NDPS Act, came forward that it is not a mandate on the investigating officer or on the policeman or on the NCB official to actually have to do that. There is room जहाँ पे उसके पास discretion का एक chance है, where he can say that he did not get the chance to go to the magistrate for this particular statement, or why he couldn't take permission from the gazetted officer or the magistrate to conduct a search and seizure of whatever material he got from the car, from your pocket, from your bag. But the important thing to keep in mind is that once he is doing all of that by himself without taking the requisite permission under the act, उसको reasons in writing देने पड़ेंगे to his immediate senior that why he did not have the time in the first place. So this procedure clearly lays down that there is a check and balance, but there is again a loophole in this case. And accordingly, in the case of Kaleem Tumba, it was said that जाने की ज़रूरत नहीं थी gazetted officer के पास या magistrate के पास to conduct the search, since the discretion was available to the investigating officer in this particular scenario. अब बहुत सारे cases में क्या होता है कि आदमी देखता है कि ये तो confession जाके पुलिस को कर दी, on the basis of which the police will lodge an FIR, and accordingly you will be harassed by going behind bars after being arrested, and the prolonged trial and the pendency in Indian courts will definitely change the way your life has been going on till then. However, in the case of Rajkumar Karwal versus Union of India, the very important principle that A, confessional statement cannot be used against you as admissible evidence in the case of trial, which is again a very common principle under CRPC and criminal law across the world. However, there is again a catch to that on the basis of a confessional statement, if there is anything that comes out, let's say a recovery is made or the police is able to find any evidence like hard tangible evidence, recovery of drugs या किसी और बंदे का contact who's a trafficker, who's a drug dealer, etc. Then post such recovery, the confessional statement gains some admissible value, however not being still fully admissible in court, and that's pretty much the principle in this scenario. So the next judgment is Mukesh Singh versus State Narcotic Branch of Delhi, in which case the legal principle held as this. So जैसे मैं पहले बता रहा था कि usually क्या होता है, एक टिप आती है जिसमें एक informant होगा जो बताएगा कि ऐसी जगह पे लाजपत नगर के फ्लाईओवर के नीचे इस बंदे के पास ये मिला है, इज एन इन्फॉर्मेंट, एंड अकॉर्डिंगली द पुलिसमैन एक्ट्स अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन. हाउएवर इन अ सिनेरियो जहाँ पे इन्फॉर्मेंट खुद ही पुलिस ऑफिसर होता है जो खुद केस लॉन्च कर रहा है, इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ बायस व्हिच कम्स इनटू द जजमेंट नंबर 1 बीइंग तूफान सिंह. तूफान सिंह में ले डाउन क्या करा गया? तूफान सिंह में ये ले डाउन करा गया कि अभी हम ले डाउन नहीं कर सकते हैं ये दो चीज़ें. A, that अगर कोई officer who is not a police officer under the NDPS Act or the respective state police can be considered as a police officer. B, that अगर आप ऐसे बंदे को एक कन्फेशन देते हो, कैन इट बी ट्रीटेड एज एडमिसिबल एविडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ अ ट्रायल? एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो, वी वोंट बी एबल टू डिटरमिन दैट राइट नाउ. दिस नीड्स टू बी रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच हु विल डिसाइड दैट लेट्स से नार्कोटिक एनसीबी का बंदा या डीआरआई ऑफिसर या
कोई स्टेट नारकोटिक डिपार्टमेंट का बंदा अगर इस एक्ट के अंदर एम्पावर करा जा सकता है टू एक्ट एज अ पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिंग एन FIR, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन एंड देयर आफ्टर मूविंग विद द ट्रायल. एंड अकॉर्डिंगली एनी पर्सन हु इज मेकिंग अ कन्फेशनल स्टेटमेंट टू सच अ पर्सन कैन बी treated as inadmissible evidence for the purpose of trial and therefore arraigned as an accused by such person. Judgment number 2 being Rizwan Khan versus State of Chhattisgarh. Now, two principles can be culled out from this judgment for the purpose of considering it a landmark judgment. A. ऑफिशियल विटनेसेस या अगर सिर्फ विटनेसेस हैं आपके केस में एंड यू डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट विटनेसेस टू कंफर्म द वर्जन ऑफ फैक्ट्स एज बीइंग टोल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या इन चीज़ों को आप कंसिडर करोगे जस्ट टू प्रूव दैट द ट्रायल इज सक्सेसफुल एंड कन्विक्शन कैन बी सस्टेन्ड, और बी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यू नीड एन इंडिपेंडेंट विटनेस. द कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट एज द लॉ इज लेड डाउन बाय अ कैटेन ऑफ जजमेंट्स बिफोर, द ऑफिशियल विटनेसेस आर मोर देन सफिशिएंट टू प्रोसीड विद द केस एंड द ट्रायल और द अक्विटल विल नॉट बी समथिंग दैट विल बी affected just because कोई independent witness नहीं है जो बोल रहा है कि ये हुआ था या नहीं हुआ था. B. In this case what happened was गाड़ी का ओनर था, गाड़ी में और भी लोग थे जो पकड़े गए थे and the owner of the vehicle tried to claim a defense, a shitty one at that, कि मेरी तो बस गाड़ी है, मुझे नहीं पता था इसमें है. द कोर्ट हेल्ड दैट द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल इज सिंपली नॉट इन क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वन, आपसे ड्रग्स पकड़े गए हैं एंड जब आपसे ड्रग्स पकड़े गए हैं द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल इज नॉट इवन इन क्वेश्चन एनीमोर एंड देयरफोर इट डजंट मैटर. व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ रिलेटेड जजमेंट ऑफ बूटा सिंह. अब बूटा सिंह में क्या हुआ? बूटा सिंह में गाड़ी के अंदर से ड्रग्स पकड़े गए. एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी के अंदर से पकड़े गए इज अगेन समथिंग व्हिच वाज इन क्वेश्चन कि गाड़ी क्या है, क्या गाड़ी पब्लिक स्पेस है या गाड़ी प्राइवेट स्पेस है ना. अगर गाड़ी आपके घर पे खड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके गराज के अंदर पार्क्ड है, इट विल श्योरली बी अ प्राइवेट स्पेस एंड एनी ऑफिसर हु वांट्स टू कंडक्ट अ सर्च एंड सीजर ओवर देयर विल हैव टू गेट द रिक्विजिट परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड देयरआफ्टर आल्सो टेक यू टू द गजेटेड ऑफिसर टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ NDPS एक्ट. अब NDPS एक्ट में जब प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच में डिस्टिंक्शन काफी क्लियर है तो देयर आर रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 42 एंड 43, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वन, द कार इज नॉट पब्लिक स्पेस, गाड़ी होती है प्राइवेट स्पेस. एंड अगेन तो अगर आपकी गाड़ी का सर्च एंड सीजर करना है द रूल्स ऑफ सेक्शन 42 आर टू बी ऑब्जर्व्ड एंड इन दिस केस स्पेसिफिकली सेक्शन 42 के प्रोविजंस को फॉलो ही नहीं किया था व्हिच वाज एन एडमिटेड पोजीशन बिफोर द कोर्ट. सो द कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन एंड हैड टू रिलीज द अक्यूज्ड पीपल एंड देयरफॉर द अपील वाज पास्ड. व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच इज थाना सिंह. थाना सिंह में एक आदमी 12 साल से कोर्ट के अंदर था, उसका ट्रायल आगे बढ़ नहीं रहा था, वो जेल के अंदर सड़ रहा था, बाहर आने का कुछ चारा नहीं मिल रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस पास करे विद रिगार्ड टू द फोरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी जहाँ पे ड्रग्स का असेसमेंट और एनालिसिस होना चाहिए कि कितने ड्रग्स पकड़े गए हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है. बी कि ऑफिसर्स और डिप्यूट करने की ज़रूरत है इन रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन डिपार्टमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन बेटर कर सकते हैं एंड इन केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं. सी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी लिटिगेटिंग लॉयर टू सी दैट जज के ऊपर एक ओनर्स प्लेस करा गया कि आप NDPS के केसेस में एडजर्नमेंट मत दीजिए एंड आप ट्राई करिए कि इसको एक स्पीडी मैनर में प्रोसीड करा जाए. एंड इनफैक्ट एक प्रोसीजर ले डाउन करा गया जो कि लॉयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था दैट लॉयर्स इसमें एडजर्नमेंट नहीं मांग सकते हैं एंड इट वोंट बी ग्रांटेड स्क्वायरली जैसे हर दूसरे केस में मांगी जाती है. इनफैक्ट अगर किसी वकील ने इस केस में NDPS के केस में डेट अपने हिसाब से मांगी थी अगली डेट तो उस केस में एडजर्नमेंट पॉसिबल ही नहीं है और दिया ही नहीं जाएगा. नाउ ऑब्वियसली ट्रिकलिंग इट डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस वी सी दैट व्हाइल इट मे बी ऑब्जर्व्ड इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई वेयर द कोर्ट सिस्टम इज स्टिल स्लाइटली डेवलप्ड, अदर स्टेट्स सीम टू बी लैगिंग बिहाइंड in this aspect and NDPS cases are pending for the longest time, in which some cases go up till 10-12 years without there being any outcome of the judgment whatsoever. So the next judgment is यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवाज खान. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर डाउन करा गया बेल के रिगार्डिंग. अब कहते हैं कि ड्रग्स के केस में अगर अंदर जाओ तो आराम से बाहर नहीं आओगे. दिस इज एग्जैक्टली द जजमेंट व्हाई. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब आप बेल के लिए अप्लाई करोगे तो यू हैव टू फॉलो द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बेल दैट आर लेड डाउन इन अ कैटेन ऑफ जजमेंट सच एज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, फ्लाइट रिस्क, व्हाट इज द लाइक्लीहुड आउटकम ऑफ द केस एटसेट्रा. इन द केसेस ऑफ NDPS there is also one mandatory section which needs to be observed by courts irrespective of anything.
दैट बीइंग दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने का मौका मिलना चाहिए, उस मौके का इस्तेमाल वो अपोज करने में लगाएगा। कोर्ट उस अपोजिशन को कंसिडर करेगा एंड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग इट बेल का चांस सोचा जाएगा कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। नाउ दिस इफेक्टिवली ट्रांसलेट्स टू व्हाट? इसका मतलब है अगर आप आज 4 बजे अरेस्ट हो गए तो 8 बजे आपको बेल नहीं मिल रही है, विच इन अ लॉट ऑफ केसेस being pursued by ambitious lawyers, what happens is आप ड्यूटी एमएम के घर पहुंच जाते हो या डीएम के घर पे पहुंच जाते हो टू सिक्योर योर बेल इन केस ऑफ हाई प्रोफाइल क्लाइंट, और you see there is some sort of emergency. It cannot happen under NDPS case, which we also saw in the case of Aryan Khan, जहाँ पे irrespective अच्छी खासी लीगल आर्टिलरी बड़े बड़े दिग्गजों को बिठाने के बाद भी 14 से 15 दिन जेल के पीछे आर्यन खान को बैठना पड़ा। सो इन द केस ऑफ मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू द नारकोटिक डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली इस केस में देखा गया एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि काफ़ी सारे केसेस में इन्फॉर्मेंट और पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है सेम होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ काफ़ी बार ये देखा गया है दैट अगर इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर सेम है तो इट डज अफेक्ट द ट्रायल, एंड एक बायस देखा जाता है कि क्योंकि इन्फॉर्मेंट ही क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके दिमाग में पहले से ही था कि ये लोग गलत हैं, एंड इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन अपने केस में फैक्ट्स ऐड करेगा, अपने वर्जन ऑफ फैक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें डालेगा और इन्हीं चीज़ को यूज़ करा जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ maliciously prosecuting someone as a legal strategy used by a lot of defense lawyers, criminal lawyers across the country. The court simply had A. There is no principle of law that has been laid down with regard to whether a trial will be vitiated in case the investigator and informant are the same person. इसका मतलब as simple as that कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। B. It has to be seen on a case-to-case basis and no proposition of law has been laid down by the previous precedents passed by the Supreme Court. Which brings us to another judgment, which is Madan Lal versus State of Himachal Pradesh, जिसमें क्या lay down करा गया? In simple terms, the burden of proving that the possession is not conscious is on the accused. इसका मतलब क्या हुआ? अब under general principle innocent until guilty का एक principle lay down करा गया। NDPS कहता है कि no, you are guilty unless proven innocent। अब majority of the crimes under NDPS rely on the very fact कि possession उनसे recover हुई है। अब पोजेशन के बारे में एक चीज़ है कि पोजेशन कॉन्शियस हो सकती है या पोजेशन अनकॉन्शियस हो सकती है, कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास था जी, या मेरे घर में था, या किसी ने मेरे बैग में डाल दिया, जैसे हमने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है। द कोर्ट लेड डाउन वेरी क्लियरली दैट इफ समथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम यू द बर्डन इज नाउ ऑन यू टू से कि ए ये मेरा है ही नहीं, बी ये मेरा है भी तो मुझे नहीं पता था ये मेरे पास है, एंड अकॉर्डिंगली द बर्डन इज नाउ नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस बट ऑन यू टू डिसप्रूव देयर केस, विच ओवरटर्न्स द होल प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल डाउट, एंड नाउ द प्रिंसिपल इज एक्चुअली रीजनेबल एलिगेशन। यू सी हाउ दैट्स अ वेरी स्टिकी लाइन। और कितना स्ट्रिक्ट एनडीपीएस एक्ट है ये देखा गया था गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें अक्यूज आया एक और बोला कि मैं तो गरीब लाचार आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, प्लीज मेरी सजा कम कर दो क्योंकि आपने उसकी भी कम कर दी थी। द कोर्ट टुक अ वेरी स्ट्रिंजेंट व्यू एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड पास दिस जजमेंट स्टेटिंग एज दिस कि ए ड्रग से बहुत बुरा हाल होता है सोसाइटी का, एंड ये एक मर्डर या एक कोई आड़े टेढ़े क्राइम की तरह नहीं है जिसमें कुछ भी हो जाता है। दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम जिससे हजारों फैमिलीज तबाह होती हैं, एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हैज टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस टू कंसिडर द पॉइंट ऑफ सेंटेंसिंग। एंड यूजुअली क्या देखा जाएगा कि आपको हमेशा मैक्सिमम पनिशमेंट ही लगाई जानी चाहिए फॉर एनी केस, एंड इन ऑर्डर टू टेक अ लीनिएंट व्यू इट हैज़ टू बी अ स्पेशल केस दैट हैज़ टू बी मेड बाय द डिफेंस कि हमें कम सजा दी जाए। Which brings us to the important case of Rajkumar Karwal. Rajkumar Karwal में बोला गया कि like the general principle of law, confessional statement made to a police officer is not admissible evidence. Now I know the law says that, but there's a trick to that. That अगर confession के basis पे पुलिस ने कहीं से रिकवरी कर ली, कोई ड्रग्स रिकवर कर लिए या कोई ट्रैफिकर उनके हत्थे चढ़ गया, तो उस केस में the confessional statement has an admissibility now, because now it's not just the statement, it's also what is being proved because of that statement, thereby saying that coercion नहीं हुई थी and जो भी confess करा गया था वो शायद सच था। So welcome to the next module of the NDPS Act, which is the 5 blockbuster cases of narcotics, drugs, psychotropics in India.
The first one we come to justice for SSR, सुशांत सिंह राजपूत केस. हुआ क्या? सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में पाया गया. The dead body was found. There was a lot of controversy about the ligatures on his neck, stating that whether he hung himself or somebody strangulated him. मतलब क्या उसने खुद को फांसी लगाई थी या किसी ने उसका गला दबाया था. And thereafter a lot of things unearthed, such as वो रेगुलरली चरस पीता था, उसने MDMA भी ले रखी थी, एंड द ड्रग्स केस वेंट ऑन. हिज गर्लफ्रेंड गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द होल सिनेरियो, एंड वी कम टू द केस ऑफ रिया चक्रवर्ती वर्सेस द NCB. Now the important things about this case was that one, the factual part, which states that how was Sushant Singh Rajput procuring drugs, in which it was said that he was procuring drugs through Riya Chakrabarti and she was projected as a dealer. Now that is a little far-fetched, but in order to prove that, the prosecution's version of events was that रिया चक्रवर्ती का भाई एक्चुअली किसी से खरीद के लाता था, वो रिया चक्रवर्ती को बेचता था, और फिर रिया चक्रवर्ती आगे सुशांत सिंह राजपूत को बेचती थी. The case obviously did not have merit from day one because of the poorly narrated facts in the case, and the court eventually had to go ahead giving bail to Riya Chakrabarti, stating as one of the main things on the basis of the factual scenario itself that one, Riya Chakrabarti is not a dealer because the amount of quantity that was recovered was very less. The transactions that were there were probably too little to consider it as commercial quantity. And at the end of the day, if there is no commercial transaction, there isn't really an allegation of any commercial quantity being there in NDPS cases. And consequently, the case was ruled in favor of Riya Chakrabarti at the end of the bail, so far as the bail angle is concerned. And another controversy in this case was, which was the legal aspect, was that there were a lot of FIRs. One was in Mumbai, one was in Bihar, and consequently CBI had to step in by the angle of court's intervention and therefore taking over the case. Now the legal angle is an interesting angle, and it's not related to NDPS but has more to do with what is a zero FIR where it is lodged. So we won't cover that in this module, but we'll come to the next blockbuster case, which is the Aryan Khan case. Aryan Khan के केस में क्या हुआ? एक यॉट पे हो रही थी पार्टी में NCB के ऑफिशियल्स पहुंचे, तो बेसिकली बोट लेके वो उस यॉट तक गए. वहां पे उन्होंने एक बंदे के जूते से कोकेन बरामद करी. नाउ दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट इट एज अ केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, इन विच केस दे सेड दैट Aryan Khan is a part of an international drug cartel, and the question of bail again came before the court, and a lot of factual conspectors had to be put in place. While Mukul Rohatgi, Man Shinde, and a lot of celebrated lawyers were appearing before not just the trial court but the High Court as well as the Supreme Court with regard to securing a bail. But at the end of the day, the principle of law that was being followed was very clear, that whether an act of being caught under the NDPS Act for a quantity lesser than 3 years can be considered as a bailable offence. Why? Because as simple as that, क्या होता है? According to the CRPC, any offence which carries an imprisonment of less than 3 years has to be considered as a bailable offence until unless it's specifically mentioned. Until unless it's specifically mentioned कि ये bailable offence नहीं है. The court was again very smart and made it clear that NDPS Act is a strict act and any offence under it is a non-bailable offence, irrespective of the fact कि सजा 1 साल हो, 10 साल हो या 20 साल हो. And that was the rule of law that can be culled out from the Aryan Khan case. And accordingly, bail was granted, although after a stride of more than 14 to 15 days by lawyers and Shah Rukh Khan himself. Now, interestingly, the seriousness of a drugs case is not just there in India, which is why I'm going to give you this very blockbuster case, which is not an Indian case actually. It's the case of Ross Ulbricht, which happened in the US. Allegedly, or now we can say as per the judgment of the court, that he was the founder of Silk Route. Silk Route is the biggest drug market that ever existed, having a turnover of more than $1 billion or being touted to as the next big empire. Ross Ulbricht, जिस तरीके से पकड़ा गया था, जिस तरीके से उसका trial करा गया था, has a lot of interesting nuggets over there. One, they caught him in a library, in a public library over a public access, and they just nabbed him, and from there on, he wasn't really given access to a lot of legal help that usually comes to you if you're being accused of a crime, such as one, a simple continuance in case there is a lengthy record. It is said that the documents ran into more than 10,000 pages, somewhere around 14,000 pages,
For which Ross Albright said कि मुझे कुछ time की ज़रूरत है to assess all these cases, and now the court said no, that won't happen for the simple reason that you don't have a defense with regard to your innocence, and you don't have anything to put forward as to why these things were discovered from you. B, that the drugs case that was there in this specific scenario was something that had a lot of technology being in use. They were operating on the dark web with the use of very sophisticated tools. So the way they were able to identify after a case investigation which lasted more than 2 years, and the only way they did it was they were able to find a deleted username on a Reddit comment thread, and from there they were able to post a spy or decoy in the entire drug operations who was contacting with Ross Albright, and from there on it went to the point that finally the IP address that they were able to trace down was from a laptop which was in a public library जहाँ पे Ross Albright बैठा था, and the police officers went there and they arrested him. A lot of information about the Silk Route is very interesting, and you might probably want to check out YouTube for more information on that. But so far as the law is concerned, you can see that the seriousness of NDPS Act goes to not just India but even US, and that's why the courts, the governments, as well as the accused people should fear it everywhere, especially including India, considering the pendency of the cases altogether. Now, coming to the fourth set of blockbuster cases. Now, when I say set of blockbuster cases, I actually mention a lot of celebrities such as Bharti Singh and a lot of other people who you might not have heard कि उनका NDPS केस का क्या हुआ जब उनसे चरस या गांजा बरामद करा गया था. So what happens is under 27, when you say that you're an addict, after that you have to say that I volunteer for going to a de-addiction center and I want to rehabilitate myself, and the court please grant me immunity and please exempt me from the trial of this case, please मैं नहीं कर पाऊंगा ये. And that is what happened in the case of Bharti Singh and his husband. That is what happens with a lot of B-list and C-list celebrities in India, that when they are caught, they say हमें please जाने दो de-addiction center, and de-addiction center जाने के बाद 1 साल की एक रिपोर्ट बनती है where they go through a psychological evaluation. A report is made that the accused has gone through the procedure of de-addiction. He is now fully reformed ex-addict, and अब इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है to go through the entire ordeal of going through the pendency of a trial in before the honorable court, and that is how that was a boring one. But I get it. But now we come to the most interesting and the best blockbuster case of NDPS. NCB has been investigating a crime. Before I say that, there's a disclaimer that this is an ongoing case altogether, and whatever I say surely isn't a part of law, but a lot of it has been culled out from the investigations and other things that I was able to get my hands on because of multiple queries coming from dealers, from people who have been served with a notice to appear before NCB, the State Narcotics Department, etc., etc. But when I get to it, the biggest LSD bust was made by the NCB back in March this year when they seized somewhere around 14,900 acid plots, the biggest ever in Indian history. And 14,000 LSD plots का मतलब है कि 14,000 लोग 18 घंटे के लिए अच्छे तरीके से भंड हो सकते हैं. An investigation into this case revealed that there are bigger things at play, which is the Mexican cartel led by a guy named Zambada. This Zambada guy was setting up his first lab in India, in which he was setting up a unit of more than 1 lakh acid plots, and people from the Indian dark web circuit were contracted for this purpose of setting this lab, setting this dealership, this shop for the Southeast Asian region, and they were supposed to cater to whatever demands will come in from there, thus having an operations section, having somebody to manage the delivery, etc. With this, the investigation into this crime led to another FIR being lodged in the subsequent months, and in August we came to another FIR in which again the biggest ever LSD acid bust was made, where around 15,000 acid blots were again seized by the NCB. That is a total of somewhere around 29,000 acid blots being confiscated by the Narcotics Control Bureau. Now if you try to access the information about what is this case, what is the FIR number, you won't be able to get that because the sensitivity of this case goes to the point that there's a team of more than 100 officers in this scenario. The two biggest chemists in the world which know the formula to make the highest quality LSD in the world are being touted as the people who are behind this entire cartel and the operations. Number one being, so the chemists being Dr. Swiss and Gamma Goblins. I know. Dr. Swiss and Gamma Goblins are
said to be the world's best chemists who give the best LSD ever produced on Earth so far as the last 20 years is concerned, with a purity of somewhere around 90% to 95% for most of their acid blots. In fact, their life is such that they don't even sell one or two acid blots on the internet. They usually ship in large packages selling 1,000 and 10,000 or in some cases even 100 acid blots to one person. और यही बंदा जो होता है वो एक एक दो दो acid blots करके society में इसको आगे अपने consumers तक पहुंचाता है. तो in this case what has happened is, interestingly, one person has died from what little we know. One person is handicapped to the point that he cannot make any statements anymore because of being physically and mentally now damaged to the point that he has lost his faculties. And the case has come up to the point of investigation that notices have been served to people जिनके नाम एक लिस्ट से निकाले गए थे, which was confiscated from a guy in the region of Ballabgarh in Delhi, being said as the mastermind behind the Zambada cartel's operations in India. Now, when this guy was nabbed by the NCB officials, इस आदमी से एक लिस्ट ली गई थी जिसमें कोरियर के नाम, कस्टमर्स के नाम, उनके एड्रेसेस वगैरह सब पाए गए थे. टू ऑल द पीपल हु वर गिवन दिस डिलीवरी, उनको नोटिस दिया गया कि NCB के सामने आप अपेयर होइए टू corroborate whatever information NCB has about this, etc. And the interesting part is that they couldn't have charged any of these customers who had purchased anything because of the fact that there was only a courier receipt, there was only an address, and there was only a name. There was no recovery of any material whatsoever from any of these customers. So the max that they could be forced into was आप admit कर दो, confess कर दो, and then we'll see where we can take it from there. To which the legal advices that were given by an army of lawyers across Delhi because the investigation is being held in Delhi and most of the lawyers who are dealing in criminal cases in Delhi were contacted by people across India, especially the south of India, in Bangalore, in Goa, in Kodaikanal, in Kerala, in Tamil Nadu. The operations were primarily being held in the south of India. And funnily, from what little we have seen till date, that none of the customers who didn't say anything and just simply said हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है या ये आपको हमारा नाम कहाँ से मिला है या how do you have my number, were asked to come twice, thrice before the NCB officers, and thereafter they were let go. Which brings us to the most important and probably the critical part of realizing that irrespective of the fact that how sensitive a case of narcotics can be against you, if there is no recovery or there is no possession being found on you, the prosecution's version suffers a great deal because A, they are not able to connect you directly with any drug, B, that the connection whatever they have is now only said to be provable by way of some digital evidence, the digital evidence being either a telegram chat, a WhatsApp payment, a Paytm transaction, or something that might be just a conversation on SMS, on apps like Vicar, on dark web, etc. जहाँ पे they will be able to say that, but the admissibility of such evidence for the purpose of trying you, for the purpose of arresting you, is very little in the hands of NCB or any other enforcement agency, be it the state police, be it the NCB, be it the narcotics department of your state police, or be it just any of the CIA, NSS, etc. etc. So with that I conclude this module. I hope you enjoyed the 5 blockbuster cases of drugs and psychotropics in India. And we'll jump over to the next module. Please do check out the case analysis and the breakdown of all the 5 cases, and I'll leave you with 3 interesting questions of NDPS which I'd want you to come up with an answer before you start the next module. Number 1, अगर आप एक आदमी से ड्रग्स लेने गए हो, उसने आपको एक पन्नी में डिस्प्रिन तोड़ के उसका पाउडर दे दिया, तो क्या होगा इन केस अगर पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ लेता है? कैन यू बी चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ बाइंग ड्रग्स, हैविंग ड्रग्स ऑन यू जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपसे पाउडर मिला है एंड वो एक्चुअली ड्रग्स नहीं है? नंबर 2 क्वेश्चन, दैट व्हाइल अ लॉट ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स हैव बीन नोटिफाइड टू बी मैन्युफैक्चर ड्रग्स और साइकोट्रोपिक्स अंडर द एक्ट, what is the legality of mushrooms in India which have hallucinogenic properties? And lastly, the third and the most technical part, that under the NDPS Act there is a differentiation between manufacturing and production, which I explained in module 1 when I was doing the definitions under the section 2 of this act. Manufacture में आप chemical डालोगे और
प्रोडक्शन में आप जो नेचुरल पौधे पत्ते हैं उनसे एक्सट्रैक्शन करोगे. इन केस अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन नाउ कम्स अप विद अ टेक्नोलॉजी which has to do with gene sequencing and now being able to grow a plant from a sample from a DNA or from something very small in a lab, and consumption of that leaf, consumption of that plant itself has psychotropic properties. Can that person be charged for, with production or manufacturing or whatever? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता देता हूँ. एक बायोलॉजी केमिस्ट्री लैब में एक आदमी ने अब एक टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो एक पीटरी डिश में एक पत्ता उगा सकता है. जैसे हमने देखा है कि शीप उगा सकते हैं या अलग अलग पौधों को हम उगा सकते हैं, वेरी स्मॉल सैम्पल्स ऑफ इट, एंड इट डजंट रियली रिक्वायर फार्मिंग कल्टिवेशन बट ओनली हैज टू डू विद द बायोलॉजी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. कैन दैट पर्सन बी चार्ज्ड अंडर NDPS? एंड इफ ही कैन बी चार्ज्ड, वेदर ही विल बी चार्ज्ड अंडर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर? यू हैव अ link to the Google sheet with these answers. Keep it brief, under 150 characters, to come up with the principle of law for defending whatever position you say on all these three questions. And with that, we'll catch you in the next module.